my dear students. Hope you all are doing well and staying at home. This is your English teacher, Ms. Mehek Fatma, and this is our lecture number 2 of grade 7. Today, your class is all about English language, so I want you all to take out your grammar tree and keep it in front of you. Okay, so which topic today we are gonna study is verbs, transitive verbs and intransitive verbs. Before starting transitive and intransitive verbs, let's discuss what actually verb is. Verb क्या होता है? ये I know that we're in class 7 and everybody knows that verb what actually is. ठीक है? कोई action जो subject को support करे ना sentence, that is verb. ठीक है? Any action is a verb. Let's come to this point here. As you can see on a board, this is a clue to study about verbs. ठीक है? Object of any substance is the one affected by the action carried out by verb. इसके पहले पार्ट को पढ़े. Object of any substance is the one affected by the action. Let's read it till here. ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर इसको हम इस फॉर्मूला से कनेक्ट करें, जो कि आप लोग यूजुअली टेंसेस जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वी यूज टू मेक फॉर्मूलाज फॉर आवर हेल्प, नॉट टू स्टडी और टू जस्ट लर्न इट, वी जस्ट राइट इट फॉर आवर हेल्प. ठीक है? हम अपनी हेल्प के लिए फॉर्मूलाज लिखते हैं. सो हियर इन दिस फॉर्मूला इफ वी कनेक्ट दिस थिंग टू दिस पॉइंट, वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल अबाउट दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है? ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, ये ऑब्जेक्ट है किसी भी सब्सटेंस का, इज द वन अफेक्टेड बाय द एक्शन. ये ऑब्जेक्ट किससे अफेक्ट कर रहा है? इस एक्शन से. वर्ड कैरीड आउट बाय द वर्ड, एक ऐसा एक्शन जो वर्ड के जरिए से कैरी आउट हो जो कि अफेक्ट करे इस ऑब्जेक्ट को. मेन पॉइंट आज के हमारे पूरे टॉपिक का ये होगा that an object is affecting, verb is affecting that object. ठीक है? और verb कौन सा? एक action. यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि object of any substance is the one affected by the action carried out of by the verb. जो भी action carried out हो रहा है verb से, वो affect कर रहा है object. Clear? Okay. Let's. As you can see, I have given you examples on the board, and if you just consider it, you have three things in this: subject, verb, object. Subject, verb, object. Subject, verb, object. ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज को, हमारे पास हर सेंटेंस में these things are main. ठीक है? लेकिन Sana is a subject. Eat is a verb. Sana eats. Sana eats what? Sana eats an apple. This verb is affecting to that object. They played cricket. They is a subject. Played is a verb. They are connecting. Cricket is connecting by this verb. ठीक है? अगर मैं बीच से verb को हटा दूं, can you see they cricket? कोई sentence बना, कोई base बनी, कोई समझ में आने वाली बात है? No. This subject, this verb matters a lot in the sentence. ठीक है? अगर हम लोग third sentence में जाएं, Ali works in office. Here as well, if I deduct this word from here, Ali in office, what does it mean? ठीक है? It means verbs matter a lot. Here, till here, with the help of example, हमने इस चीज को समझा that verb is necessary in a sentence if we are मेकिंग अ एक्शन सेंटेंस. ठीक है? कोई एक्शन सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ड इज नेसेसरी इन दैट सेंटेंस. ठीक है? यहाँ तक हम इस चीज को खत्म करते हैं दैट सब्जेक्ट इज वर्ड इज नेसेसरी इन अ व्हिच सेंटेंस. कम ऑन, लेट्स ट्राई टू मेक इट बाय योरसेल्फ इन अ एक्शन सेंटेंस. वेरी गुड. ठीक है? यहाँ तक हमें क्लियर हो गई बात. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, here I have written one more sentence. अभी तक हमने ये पढ़ लिया what is the connection between an object and a verb. Right now here something is written that verb may or may not. One main thing is may or may not require. Verb may or may not require an object. Usually ये होता है हमारे पास किसी sentence में it's
what is written in the sentence. ठीक है, repeating it again कि वर्ड को हमेशा वर्ड को जरूरत पड़ सकती है और नहीं भी पड़ सकती. It's not required, it's not compulsory to write an object in a sentence to give complete meaning of a sentence. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट लिखें to send to convey your message to someone else. ठीक है, it's written here that word may or may not require an object to convey complete message of their action. यहाँ तक इस चीज को दोबारा से एक और दफा छोटा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि वर्ड को हमेशा नीड नहीं होती है. एक सेंटेंस अगर एक एक्शन सेंटेंस है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें आपको वर्ड की नीड है कि वर्ड होना जरूरी है. लेकिन हर सेंटेंस में जिसमें वर्ड हो उसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है. किसी सेंटेंस में होगा, किसी सेंटेंस में जरूरी नहीं हो. ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स पर आए तो I threw the rock. ठीक है, ये एक सेंटेंस है. What is subject? This is subject. This is your verb and this is your object. यहाँ तक बात क्लियर हुई? Subject, verb, object. आप क्या समझते हैं? What do you think? Here if I not write this thing, object में अगर ना लिखूं, हमने बात पढ़ी ना कि हमेशा वर्ड को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है टू कन्वे देयर मैसेज. ठीक है, अगर मैं यहाँ रॉक को ना लिखूं और मैं सिर्फ लिखूं I threw, ठीक है, मैं सिर्फ इतना सा लिखूं. If I'm sitting with my mother and if I say that I threw, she will ask what you throw. What did you throw? कहाँ फेंका? क्या फेंका? What happened? She will ask so many questions. If I say, यानी complete meaning उनका तो sentence का नहीं पहुंचा. दोबारा से देखते हैं. I threw the rock. ठीक है, मैंने पत्थर फेंका. अगर मैं ये कहूँ, मैं इसको हटा देती हूँ और मैं कहती हूँ मैं इसको हटा देती हूँ. And if I say I threw, my mother will definitely ask that क्या फेंका? क्यों फेंका? What happened? It means कि हमारा यहाँ पे मैसेज कंप्लीट कन्वे नहीं हुआ है. It means that here verb needs an object to convey a complete message. दोबारा से इस चीज को सुने. एक सेंटेंस में, हर सेंटेंस में verb doesn't need a object to complete their message, an object to complete a proper message of a sentence. But sometimes it is necessary to write object in a sentence to convey a complete message. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप the रॉक को हटा दें तो that action sentence is not completed. और ये ना तो complete message को convey कर रहा है that what actually you want to say in a sentence. ठीक है? For suppose हम अगर इस sentence पर, she loves instrumental music. Here what is subject? Subject, verb, object. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि she loves instrumental music, मैं object को हटा देती हूँ, मैं नहीं लिख रही object को, and I'm just writing she loves. She loves what? ठीक है, complete message हमारे पास गया? नहीं गया, definitely नहीं गया. मैं क्लास में बैठूँ और मैं कहूँ Sana loves. You will definitely gonna ask that Miss Sana loves what? कंप्लीट मैसेज गया आपको? नहीं गया. एक एक्शन का कंप्लीट मैसेज नहीं गया. इस चीज को क्लियर करें, एक एक्शन का कंप्लीट मैसेज नहीं गया. अगर मैं बोलूं कि she loves instrumental music, उसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है, then you will say okay fine, now the message is complete. Now whatever you were trying to convey, that is in our mind. अगर थर्ड सेंटेंस पर आए, फातिमा subject, words is verb and hospital is object. She works what? कन्वे हुआ, मैसेज डायरेक्ट आया, पूरा मैसेज आया? नहीं आया. मैं इसको हटा दूं, just read it this. फातिमा works, हॉस्पिटल को हटा देते हैं. कुछ समझ में आया? बस इतना समझ में आया कि फातिमा works where, फातिमा works about what, ये सब कुछ हमें समझ में नहीं आया. It means here also it is necessary to write object with a verb. Let's come through the last example. The baby smiled in its sleep. अगर मैं कहूँ directly the baby smiled, oh my god, she's smiling. Smiling is a verb and she is a subject. अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे? She is smiling for what? और नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा मैसेज कन्वे हो चुका है, हमें क्लियर हो गई बात.
what teacher is wanna say us. यहाँ पे देखो the baby smiled, मैं ये हटा दूँ आप समझ जाएंगे baby मुस्कुराया, oh she's so cute, she's smiling. What is this thing? This thing is like you're conveying your message, you're conveying your complete message. Here you don't need to write a object with it. Clear? हर sentence में एक दफा review करवा रही हूँ, हर sentence में it is not necessary to write object with verb, but it may or may not require an object to convey the complete message. ठीक है? Let's move forward. ठीक है, अभी तक whatever we have done, that all जो मैंने आपको बताया कि sentence में verb object required था, object required नहीं था, कैसे हमें पता चलेगा, ये सब कुछ these words are actually called, जो हम may और may not कर रहे थे उनको एक term English language में दी गई है, that is transitive and intransitive. ठीक है, एक ऐसा word के जिसको object की need है अपने मैसेज को, अपने मीनिंग को पूरा कंप्लीट कन्वे करने की, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स के जिसमें नीड है, वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शंस. एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ड के जिसको नीड है ऑब्जेक्ट की टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स. और एक ऐसा वर्ड के जिसको, एक ऐसा ऑब्जेक्ट के जिसको वर्ड को नीड नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट लिखे अपने अंदर, दैट मीन्स टू कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शन इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड है टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शन. ठीक है, एग्जांपल्स को अगर देखें, द बॉयज आर सिंगिंग सॉन्ग्स. The boys are singing songs. The boys is a subject, singing is a verb, song is a object. ठीक है, अगर मैं इनको the boys are singing songs, singing को कनेक्ट करूँ song से, तो song एक ऐसा object है कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ना भी बोलूँ तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ the boys are singing, ठीक है, boys sing कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं songs लगा रही हूँ तो now that meaning is complete. इस song के लगाने से पूरे सेंटेंस का मैसेज, मीनिंग पूरा कंप्लीट कन्वे होगा. अच्छा, बॉयज गाना गा रहे थे. अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल देखूँ, द क्लाउन लाफ्ड अ लॉट. द क्लाउन इज अ सब्जेक्ट, लाफ्ड इज अ वर्ब एंड अ लॉट इज अ ऑब्जेक्ट. अगर मैं यहाँ द क्लाउन लाफ्ड, क्लाउन हंसे, अ लॉट ना भी लगाऊं, बहुत ज्यादा हंसे, तो इट डजंट मैटर. ठीक है, अगर मैं अ लॉट को ना लगाऊं, आप देखिए आपको सेंटेंस पूरा समझ में आ रहा है, यानी अगर यहाँ तक सेंटेंस लिखा हो तो योर मैसेज, दैट मैसेज इज कन्वेइंग, ऑब्जेक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट. द क्लाउन लाफ्ड, क्लाउन हंसा. अगर यहाँ पे भी मैं इसको ना लगाऊं और लगाऊं, दोनों में फर्क ये देखें. द बॉयज आर सिंगिंग सॉन्ग्स, बॉयज सॉन्ग सिंग कर रहे थे. अगर मैं सॉन्ग को ना लगाऊं तो बॉयज आर सिंगिंग, ठीक है, बॉयज सिंग कर, लेकिन मैसेज कंप्लीटली कन्वे नहीं हुआ है. अच्छा, अगर यहाँ पे अलॉट की जगह कुछ और होता तो होप सो कि शायद फिर यहाँ पे लाफ्ड हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स ना होता, वो फिर ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता. लेकिन यहाँ सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस चीज को मैटर नहीं करता है कि वो हो या ना हो. ठीक है, वो रिक्वायर हो या ना, अगर ये नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मेरा मैसेज तब भी कंप्लीटली कन्वे हो रहा है. दोबारा से बता देती हूँ एक दफा और कि एक ऐसा वर्ब कि जिसको नीड हो ऑब्जेक्ट की टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शन इज ट्रांजिटिव वर्ब, और एक ऐसा एक्शन जिसको जरूरत ना हो ऑब्जेक्ट की टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग ऑफ दैट एक्शन इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो चुका है, सो यू कैन टेक आउट योर बुक पेज नंबर 23, 22, 23 एंड 24. दिस इज आवर टॉपिक व्हिच वी आर डूइंग टुडे. पेज नंबर 23 पे एक्सरसाइज बी लिखी हुई है. एक्सरसाइज बी में व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू फिल दोस ब्लैंक्स व्हिच आर गिवन बिलो with the help of the verbs which are written in a word bank. ठीक है, word bank ऊपर बना हुआ है. आपको उस word bank में बहुत सारे transitive verbs लिखे. transitive verbs कौन से होते हैं? जो कि रिक्वायर करते हैं ऑब्जेक्ट को टू कंप्लीट, टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर सेंटेंस. ठीक है, टू ऑफ देयर एक्शन. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स लिखे हुए हैं उस वर्ड बैंक में, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट अ प्रॉपर, जो कि सूटेबल हो, मोस्ट सूटेबल ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको फिल करने हैं इन दोस ब्लैंक्स. ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको
Sentence number 1 that is written, Farhan dashed the household chores as soon as he could. यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो the most suitable word is finished. ठीक है, finished. इसके साथ ही आपको इसी तरह से you have to complete your sentences in your book with the help of word bank. ठीक है? Okay, let's come to the sentence. It's written there. Some transitive verbs can have two objects. ये तो हमें पता है कि transitive verb को object की need है to convey their complete meaning. लेकिन अभी हमें एक नई बात पता चली that is कि transitive verbs के पास दो objects भी हो सकते हैं to convey their message. Okay, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे about transitive verbs, as I said कि transitive verbs sometimes require two objects to convey a complete meaning of their action. Here we have two examples with us. If we read, my grandparents gave me a hug on my birthday. Here my grandparents is a subject. Gave is a verb. Gave क्या है? Verb होगा हमारे पास. And this me is a, अगर हम यहाँ तक बात करें, and this me is a object. ठीक है? If we move forward about a hug on my birthday, here a hug is also object. यहाँ it means that in this sentence transitive verbs require two objects to convey a complete meaning of that verb. ठीक है? Second sentence पर आते हैं, the child. The child is a subject, told is a verb, and us is a object. Us, the child told us. The truth is also a object. Here also we have two objects in this sentence. ठीक है? Transitive verbs एक ऐसे verbs होते हैं कि जिनको object required होता है to convey a complete meaning of that sentence. And इसके अलावा sometimes it happens that they require two objects to convey a complete meaning of their actions. If we break these sentences into a part, different parts, तो हमने देखा subject को हमने अलग थोड़ा break किया, give को अलग break किया. Me and hug is both of them are object. ठीक है? इसका मतलब ये हमारे पास sentence में we have to make our mind clear about what are direct and what are indirect object. ठीक है? Direct object और indirect object क्या होता है? Direct object होता है कि ऐसा कौन सा काम है जो कि किया गया है. What is a question for a direct object? अगर हम इस सेंटेंस में देखें, my grandparent gave me a hug on my birthday. मेरे grandparents ने मुझे hug दिया था on my birthday. यहाँ पे ऐसा कौन सा काम है जो what को question का आंसर दे? What your grandparent gave you on your birthday? My grandparents gave me a hug. Here hug acts as a direct object. ठीक है? hug यहाँ पे direct object के तौर पे act होगा. Why? Because they are answering the question of what. Now अगर हम दोबारा से इसको what को हटा के पढ़ें, my grandparent gave me. Here me is acting as an indirect object. How it is acting as an indirect object? Indirect object gives us a question answer of whom. Indirect object. ठीक है? Indirect object हमें आंसर देता है whom के क्वेश्चन का. whom क्या होता है? किसने तुम्हें गिफ्ट दिया, या ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो इन ग्रैंडपेरेंट्स ने किसको गिफ्ट दिया. टू whom grandparents gave a gift. To whom grandparents gave? Me. My grandparents gave me a hug on my birthday. यहाँ पे me act कर रहा है as an indirect object because it is telling us about whom. What is answering the question for direct object and whom is answering for a question of indirect object. Second sentence के अगर हम example पे आए, so here as well, us and the truth. The child told us. To whom the child told us is telling us. To whom the child told, that is telling us about us. That is indirect object, and the truth is telling us about what, which means कि क्या बताया, what the child told us. That answer is about truth. So here truth will act as a direct object and us will act as an indirect object. Sometimes indirect objects come before direct object. जैसे अभी हम लोगों ने example में पढ़ा था, जैसे me was coming before a hug. Me is indirect object and a hug is a direct object. So me was coming before
indirect object and the truth was a direct object. I hope now this topic is clear for you all about transitive and intransitive verbs. ठीक है, एक दफा छोटा सा quick review करती हूँ that transitive verbs are those verbs who require a object to give a convey a complete meaning of their action. और intransitive verbs कौन से थे जिनको require इतना जरूरी नहीं होता है of an object to convey a complete meaning of their message. ठीक है, here your home task is you have to do exercise A and exercise B in grammar tree page number 22 and 23 and you have to do exercise C in your English language copy from page number 24 of your grammar tree. ठीक है, now I will explain you how you have to do your exercise and I will solve one for you so that you will do it better. Okay students, here your homework is you have to write date here on the top of the page of all the exercise, and then what you have to do, it is written that identify the verbs in the sentence given below. Write Y for verb that require an object and N for the verb that do not require. ठीक है, आप Y उन verbs उन sentence के आगे Y लिखेंगे जिसमें object require होगा और N लिखेंगे उन objects के आगे जिनमें verb object require नहीं होगा. As I have done one for you, the baby smiled in its sleep. ठीक है, the baby is a subject here, smile is a verb and its sleep is a object. यहाँ पे अगर मैं its sleep को ना भी लिखूं तो भी my message is conveying. ठीक है, the next page it's written there, you have to write date here on the top and then what you have to do is complete the given sentence with suitable transitive verb from the box below. ठीक है, word bank आपके पास दिया हुआ है. what you have to do, आपको जो सबसे ज़्यादा suitable transitive verb होगा वो वहाँ पे blank में लिखना है. as I have written finished there. ठीक है, you will turn the page. In this, what you will do, you will make this chart in your copy and you have to write question here. ठीक है, then what you will do, break the given sentence down. You have to break sentence in different parts as it was given an example here as well, and it's given, you have to do it like this one I have done for you. ठीक है, what you have to do is आपको sentence को break down करना है and then जो सेंटेंस को जो कॉलम में जो सेंटेंस के वर्ड्स आएंगे यू हैव टू राइट दैट. फॉर सपोज फर्स्ट इज माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल मी वंडरफुल स्टोरीज. ठीक है, माई ग्रैंड पेरेंट इज अ सब्जेक्ट, वर्ब ग्रैंड पेरेंट इज अ सब्जेक्ट, टेल इज अ वर्ब एंड मी इज अ ऑब्जेक्ट. वंडरफुल स्टोरीज इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. आपको इस चीज़ को खुद से समझना होगा कि व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस. ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए की हुई है दैट माई ग्रैंड पेरेंट सब्जेक्ट, वर्ब, टेल. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जो व्हाट को क्वेश्चन का आंसर करे, दैट इज वंडरफुल स्टोरीज. एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज answering the question of whom. Same इसी तरह you are not allowed to write sentences in the copy, but you have to make this chart in your copy and you have to complete it. Write proper question, make a index properly, make title page and do your all work. Thank you students. Please like, subscribe the channel and share this video.